Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class of physics we will discuss few type of motion related to simple harmonic motion. This topic is related to the unit oscillation for class 11 physics. Now let's start. First of all, we will discuss about periodic motion. Periodic motion जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने पाथ को फिर से रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. ठीक है. A periodic motion refers to any movement that is repeated at regular interval. Understood? The regular interval of time is called time period. यानी कि ऐसा टाइम जिसमें हमारे एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता हो या बॉडी कंप्लीट्स वन ऑस्किलेशन तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. Inverse of time period is called frequency and also represented by n or f. फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है इन SI यूनिट ऑफ हर्ट्ज. And how these two terms are related to each other? Frequency is equals to 1 upon time period. Understood? So periodic motion is that which is repeated at regular interval. Now come to a few example of periodic motion. जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं कि कौन कौन से मोशन पीरियडिक मोशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक रेवोल्यूशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक. इट इज नोन दैट कि अगर हम आर हैंड लेते हैं आर हैंड ऑफ क्लॉक इसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर बिकॉज आफ्टर 12 आवर इट रिपीट इट्स पाथ अगेन. सिमिलरली मिनट हैंड का जो पीरियडिक टाइम है दैट इज 1 आवर एंड ऑफ सेकेंड हैंड का पीरियड टाइम 1 मिनट का होता है. इस तरह से इफ यू हंग द पेंडुलम फ्रॉम द वॉल when pulled from one mean position to one side and lose it, so it will execute that type of to and fro motion. It is also said to be periodic. Rocking chair. रॉकिंग चेयर तो आप लोगों ने देखी होगी कि रॉकिंग चेयर एक नीचे से इसका जो लेग होता है कर्व शेप होता है और उसके ऊपर हम अगर बैठते हैं तो ये रॉक करती है यानी कि आगे पीछे टू एंड फ्रो स्केट करती है. Similar Earth revolution, Earth rotation on axis, Moon rotation around the Earth, all these are the example of periodic motion. Like here, we can see that there's a boy sitting on the chair. So this type of motion is a periodic motion. Here you can see how that boy is rocking on the chair. This type of motion is an example of periodic motion. तो जैसे आगे पीछे इससे ऑसिलेट करती है. Similarly, revolution of Earth around the Sun. It is also an example of periodic motion. It is known that after 365 or 365 1 by 4 days, it will repeat its path again. There's few difference between a periodic and non-periodic motion. You can note it down by keeping the video pause. What is different between periodic and non-periodic motion? What type of motion is it? It is repeated, and non-periodic motion are non-repeated. Time. Periodic motion. The rate of periodic motion is totally dependent on time interval, while non-periodic motion is independent of time interval. Time period. Periodic motion का एक definite time period होता है, जबकि it has time of motion. कि मोशन का जो भी टाइम लेगी उसको हम पीरियडिक मोशन नॉन पीरियडिक मोशन टाइम कहेंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. Time of motion ये वाइब्रेटरी और स्केटिक कुछ भी सकता है, while in a non-periodic motion there may be only displacement of object. Here are a few examples of that a periodic and non-periodic motion. Movement of girl sitting on swing, needle movement of a swing machine. When the load attached to spring and pulled once, जैसे कि हम इसको hung कर दें और उसे नीचे छोड़ देते, spring जो mass होगा ऊपर नीचे oscillate करेगा about mean position. ठीक है. And मर्करी इन यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब में अगर मर्करी फिल कर दें और उसको थोड़ा शेक करें तो उसमें भी जो मीन पोजीशन होगी जो कि जॉइंट पोजीशन होती है लाइक दिस टाइप. अगर हम एक यू शेप ट्यूब लेते हैं और इसमें मर्करी फिल कर दें
और एक तरफ से हम इसको एयर ब्लो करें या डिस्प्लेस करें बाई मेरा पिस्टन, तो ये अगर मीन पोजीशन एज्यूम कर ले बीच वाली, तो मर्करी लेवल इधर-उधर ऑसिलेट करेगी अबाउट दिस मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। रोटेशन ऑफ मून अराउंड द सन, जैसे कि अभी हमने अर्थ का रेवोल्यूशन का वीडियो दिखाया था, उसी तरह से मून भी रोटेट करता है। Here a few example of a non-periodic motion like motion of ball under the action of gravity, vehicle movement at variable speed in the crowded area, write on paper, soccer player is running on the grass, ball rolls on the ground and walking on the street. So all these examples are of non-periodic motion. After periodic motion, now next we come to periodic function. What are periodic function? Periodic function are those that repeat its value after regular interval. लाइक इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी साइन कॉस टेन कोई भी हो, उसमें अगर 2 पाई रेडियन हम इंक्लूड करते हैं तो उसकी वैल्यू फिर से रिपीट होने लगेगी। ठीक है, इससे कोई भी फंक्शन एफ दैट विल बी सेड टू बी पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ एम। तो अगर हम एफ एक फंक्शन लेते हैं और उसमें हम एम टाइम इंक्लूड कर दें तो इसकी वैल्यू एफ ए की इक्वल होगी, बट कंडीशन इज दैट फॉर एवरी एम शुड मोर देन 0। तो हम जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे वैसे ही एफ की रिपीटेड वैल्यू सामने जाएगी। तो वी कैन सी दैट फंक्शन पजेस सेम वैल्यू आफ्टर इंटरवल ऑफ एम। जैसे एग्जांपल बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि इफ यू ऐड 2 पाई टर्म 2 pi radian to any of the angle included with trigonometric function, you will get the same value. Now next comes to oscillatory motion. Oscillatory motion is that which move to and fro about its mean position. To and fro about fixed point, that is called oscillatory motion, and that fixed point is known as mean position or equilibrium position. Example, motion of simple pendulum, motion loaded spring, and so on. So these are the example of oscillatory motion. Now come to this video in which it is shown that there is an oscillatory motion. Here you can see that how these person are swinging on the swing. The mean position is nearly the stem where it is hung, and you can see that to and fro motion. So this is an example of oscillatory motion. Similarly, another example is that motion of pendulum. Here is a big pendulum oscillating, that you can see the big pendulum. So if this is the length of a string is longer, you can see it's a nearly straight line motion. Okay. So this type of motion is said to be oscillatory motion. Okay, suppose here you can see on the base that the center point, about the center point, this pendulum can oscillate to and fro. In the same way as that string was swinging, the pendulum is also swinging. Now come to harmonic motion. The oscillation which can represent with a single harmonic function. Single harmonic function means that in terms of trigonometric function. So if you can represent the physical quantity in terms of trigonometric function, so it is said to be an harmonic function. The oscillation which can be represented in terms of single trigonometric function, sine cos, is called harmonic function. And what is simple harmonic motion? Harmonic oscillation of constant amplitude and of single frequency under restoring force whose magnitude is proportional to displacement and always act toward mean position is called simple harmonic motion. Okay, so here the condition is that there are few conditions for simple harmonic motion to execute. One should the body should oscillate to and fro about mean position in the straight line. Other is that restoring force is proportional to displacement and always act towards mean position. The simple harmonic oscillation can be expressed as
y equals a sin omega t and y equal to a cos omega t and so on. Basically, these two equations are these two equations represent simple harmonic motion, where a is the amplitude of oscillation. And now come to this last point of non-harmonic motion. In non-harmonic oscillation, there may be two or more trigonometrical function, two or more harmonic function may be there, like y equal to a sin omega t plus b sin 2 omega t. There are two trigonometrical or harmonic function, so it is said to be a non-harmonic motion. So this was the last topic of this video. If you like this video, please like it, subscribe it, and share it to your friends. Keep watching my channel PCM Class by Ajit Agarwal for new videos of this simple harmonic motion. Thank you.